Hello everybody, welcome back to my channel, and in today's video we are going to compare a PSU job with respect to a engineering service job. Yes, so in today's video we are comparing the lifestyle and the transfer and the salary and other perspective of a PSU officer. And in terms of the PSU, I'm talking about the Maharatna PSUs. So yes, so we are going to compare a Maharatna PSU's officer versus a engineering officer, or we can say a IES officer, because what happens is that when the people prepare and they get into the public sector enterprises, and then after they feel that yes, there might be something extra in the engineering service examination, or they started comparing themselves with the IES officer. So आज के वीडियो में हम वही बात करेंगे कि आपके क्या प्रोस्पेक्टिव होने चाहिए और आपके क्या फ्यूचर गोल हैं, आपके क्या रिक्वायरमेंट है, आपके क्या प्रेफरेंसेस हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या चूज करना चाहिए, वेदर यू शुड गो एंड स्टे इन द PSU और वेदर यू शुड स्टार्ट अटेम्प्टिंग इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम. So now first of all we'll talk about the PSUs, right? कि PSU में क्या क्या benefit हैं, and then after we'll talk about the engineering service or the IES officer कि उसमें क्या क्या benefit हैं. So first of all if we talk about the PSUs, यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट गिनाऊंगा, इनके अकॉर्डिंग यू कैन डिसाइड दैट इफ़ योर प्रेफरेंसेस लाई विद दिस पॉइंट, इफ़ यू lucrative about these point, then you can go for the PSUs. And if you are not very much interested or you are not very much fascinated about this point, then you can look after for the another point which I'll be counting in the engineering service segment. Then you can decide that which point do you like the most and where do you want actually, right? So now if you talk about the PSU, the first thing that comes in terms of the Maharatna PSUs is salary. Yes, in my previous video I also brief you that the salary of the Maharatna PSU, if I talk about the ONGC, the salary lies around 16 to 18 lakh per annum, right? And if you calculate roughly, I'm saying you without including some of the benefit which are given quarterly, or some of the benefit which are given in every 6 months, if you don't if you don't accumulate them, then your salary per month would be falling around 80 to 1 lakh rupees per month in the Maharatna PSUs, such like ONGC. But in the IES officer, your salary would be around 60 to 65,000 per month, including all allowances, right? So there is a big difference in terms of the salary and in terms of the allowances. आपको PSU में जो मेरी last video है, अगर आपने उसको नहीं देखा, then you can go and watch that video. You will get to know that how many allowances a public sector pays, a good public sector pays. So in last video I have counted a number of the allowances, around 14 to 15 allowances that ONGC pays you. उसमें आपका मोबाइल अलाउंसेस, लैपटॉप अलाउंसेस, फर्नीचर अलाउंसेस. बट इफ़ यू टॉक अबाउट IES ऑफिसर, देयर इज नो एज सच अलाउंसेस, राइट? सो अगर आपको सैलरी के बारे में या मॉनेटरी बेनिफिट के बारे में ज़्यादा देखते हैं, देन यू कैन चूज ए महारत्ना PSU विदाउट एनी डाउट. सेकेंड थिंग इज दैट वैकेंसी. तो PSU के केस में वैकेंसी भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द IES ऑफिसर. आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो PSU में लाइक इवन ए सिंगल PSU रिक्रूटेड 150 वैकेंसी पर ईयर. फॉर एग्जांपल ONGC एंड NTPC, ये 100-150 वैकेंसी एक अकेला PSU रिक्रूट करता है. बट इन द केस ऑफ द IES और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, अभी जो करंट के टाइम में पूरा वैकेंसी फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर आर फॉलिंग अराउंड 40, 45, 50 मैक्सिमम वैकेंसी. So if you think that you want to go into the IES officer, but the vacancy are very less, and if you want to go to the PSU, vacancy are comparatively more. If you include all the PSU who are taking their own exam and you consider GATE exam also, तो IES के कंपैरिजन में PSU में वैकेंसी ज़्यादा है. तो अगर आप
पीएसयू में जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक और बेनिफिट है कि वहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है, यू कैन इजीली गेट इनटू द पीएसयूज, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है कि आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी। So responsibility comes with the power. You know, the more power you have, the more authority you have, the more responsibility come to you. But in the case of the PSU, आपके पास responsibility काफ़ी कम है as compared to the IAS officer. So you can go to your home without any confusion, without any much tension in your head that what will happen tomorrow and what will happen in the night also. But in the case of the railway, or in the case of the some of the big government department, there is always a concern, a responsibility, a sense of the authority that you will be feeling. You can be called any time. Though कुछ PSU में ऐसा होता है कि आपको कभी भी बुला सकते हैं, but in general if you say the responsibility is more in case of the IAS officer, you will be told each and every time, right? Now the fourth thing that is good in terms of the PSU is the political interference. Political interference PSU में नहीं है, but if you talk about IAS officer, sometime you will feel that you have been you know you have been stuck between your ethics and between the political interference, or you are being enforced to do something that is not ethical and that is not good for the growth of the country, for the faith of the country. So political interference engineering सर्विस में और सिविल सर्विस में yes of course है, but the PSU के केस में political interference नहीं है. So you can you can take your life smoothly without getting indulged into any such activities which are forcing you to do something that is not ethical and that is not good for your moral values, right? So political interference IAS में बहुत ज़्यादा PSU में नहीं है. That is the another thing, right? Now अगर हम बात करें अब पांचवी चीज़ के बारे में, then you can say the पोस्टिंग के साथ साथ एक चीज़ और जुड़ी होती है कि लाइफ स्टाइल को अब आप रिलेट कर सकते हैं आइदर विद द सैलरी और विद द लोकेशन वेयर यू आर पोस्टेड. क्योंकि अगर आपका सैलरी भी अच्छा है, यू आर पोस्टेड इनटू ए गुड महारत्ना PSU, बट your location is a remote area, then there is no sense of earning so much. You cannot spend, you know there are the number of the people who are earning a good, but they are not able to spend the money because there is nothing surrounded by them in their areas. So lifestyle more or less same है, but lifestyle के मामले में if you say then PSU a bit better, but IAS is also better. So here you cannot conclude that lifestyle किसका अच्छा होने वाला है. It depend upon the salary. एक जगह सैलरी का फैक्टर है, दूसरी जगह लोकेशन का फैक्टर है. सैलरी PSU में अच्छा होता है एंड द लोकेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का अच्छा होता है. तो लाइफस्टाइल इज बेसिकली यू कैन से null and void. Now we'll be moving towards the IAS officer, राइट. तो आपको क्या क्या चीज़ें IAS ऑफिसर में मिलती हैं और आप किस चीज़ों के बेसिस पे यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू pursue the engineering service exam, right? So the first thing is that the job profile, right, or the nature of the job. In the case of the PSU, you were having a PSU job where the stake of the government is more than 50% and the rest of the stake of that PSU lies in public hand. But in the central government job 100% security is there. PSU के केस में आपको 100% सिक्योरिटी नहीं है. इफ़ टुमारो और डे आफ्टर टुमारो PSUs को कोई सेल करता है, देन देयर विल बी क्वेश्चन ऑन योर जॉब प्रोफाइल, ऑन योर जॉब सिक्योरिटी. बट अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, देन योर जॉब इज 100% सिक्योर. ठीक है. तो सिक्योरिटी के मामले में आपका IAS is much more better. In terms of the power, yes, IAS officer is much more better. In terms of the respect, in terms of the authority recognition, IAS officer is far better than a PSU officer. So and the next is basically the future opportunity. If you choose PSU, if you choose a central government job, for example IAS officer, then you see that what is the opportunity for the future, right? So by being into the IAS ऑफिसर, बाय बीइंग इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हो सकता है कि कल को आपको डेपुटेशन पे वो लोग भेज दें. डेपुटेशन हो सकता है कंट्री में हो, मे बी फॉरेन में भी आपको डेपुटेशन पे भेजा जा सकता है इफ़ यू आर ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय,
right? Or being a group A officer, by the time you get your promotion, you ensure a lot of the experience and lot of the recognition, so there might be chances that you may get posted at the deportation in foreign country as well as in India. So इंडिया में भी आप किसी भी PSU में आप एज ए सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर के रूप में आप डेपुटेशन पे जाके पोस्टेड हो सकते हो. सो अपॉर्चुनिटी आर मच मोर बेटर इन टर्म्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय. आपको किसी भी डेपुटेशन पे भेजा जा सकता है, आपको मिनिस्ट्री में बैठा दिया जा सकता है, बिकॉज मैनी ऑफ द पीपल हु एक्चुअली गेट्स 2 to 3 प्रमोशन from the basic entry, and they may get the call to sit in the ministry at some level, right? So there has been some of the faculty who taught me during my this training, and they were the secretary of the defense minister of our country. So you can get a overall idea that the opportunity to go and to move further are more in the central government job, right? Posting के बारे में I have already told you that posting is more or less same, but if you want me to choose one, then of course posting central government की जॉब में अच्छी होती हैं as compared to the PSU, because कुछ PSUs होती हैं, like for example if you say ONGC offshore, the posting is horrible. I have been witnessed that, that's why I am sharing my own experience. Or if you talk about SAIL, if you talk about Coal India Limited, so in some of the cases you may find that the posting is very horrible and you don't see anything nearby, right? So PSU posting के comparison में कम है as compared to the IAS official, right? Now to go into the PSU, I have told you pro and cons of being into the PSU. And if you want to go into the engineering service and you want to be a IAS officer, then for that also I have told you the pro and the cons. Which you want to pick out is totally up to you. So आखिर में I want to share one of the experience that I had during the joining as an IAS officer as well as an PSU officer. So in 2019 I joined ONGC, and when I went to the ONGC office, बेसिकली ONGC के 4-5 ऑफिस हैं इन द मुंबई, एंड आपका मेडिकल चेकअप एक हॉस्पिटल में होगा. देन आफ्टर यू हैव टू गो टू द ग्रीन हाइट्स office of ONGC, and you need to submit those report into that office. Then you have to collect the acknowledgement, और वो acknowledgement आपको धारावी ऑफिस में सबमिट करना होता है. And in these nobody will guide you that where you need to go and whom you need to meet. You will go by your own expenses, you will hire your own auto. So ये कभी कभी you feel that you are not being recognizable, you are not being respected, and everybody is saying just to go and meet that individual in that particular office, and you are very new to the Mumbai, so it become very difficult. But सेम कंडीशन व्हेन यू ज्वाइन IAS ऑफिसर. जब भी मैं IAS ऑफिसर ज्वाइन किया था, एंड व्हेन आई वेंट to the Nagpur for my training, when we reached at the Nagpur station, there was a help desk on the Nagpur station established by the government, and they were escorting us, they were recognizing us, and they were welcoming us. So यहाँ पर एक डिफरेंस पता लगता है कि एज ए PSU ऑफिसर एंड एज ए IAS ऑफिसर कितना बड़ा डिफरेंस है. And then after they sent a government vehicle to pick us up from the railway station, and when we went to the academy, there was number of the people who were ready to recognize us, to welcome us, and उन्होंने बहुत अच्छा arrangement कर रखा था for all of us. They were guiding, each and everything was so smooth, and you feel highly respected. So वहाँ से ही एक चीज़ मेरे को difference पता लगता है कि हाँ, IAS is a bit better in terms of the hospitality, in terms of the respect, and in terms of the recognition. Second thing is that जब भी आप ONGC में होते हो या जब भी आप किसी फील्ड वर्क में जॉब करते हो, लाइक किसी भी PSU में अगर आप फील्ड वर्क में पोस्टेड हो या आप ऑफशोर में पोस्टेड हो, सो
आपको अपना काम एज ए एम्प्लॉय, एज ए ऑफिसर कम, और आपको एज ए वर्कर ज़्यादा लगता है, बिकॉज यू मे आस्क एनी ऑफ द इंडिविजुअल हु इज़ वर्किंग एट द ऑफशोर एरिया एंड दे विल टेल यू द राइट सिचुएशन ऑफ द वर्किंग कल्चर एट ऑफशोर एरिया। और इवन किसी किसी पीएसयू में भी, कोल इंडिया में, इफ़ यू वर्क ऑन द फील्ड तो आपको एज ए वर्कर वाला फील आएगा। बट इन द आईएएस ऑफिसर, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट, वेदर इट इज़ रेलवे, वेदर इट इज़ सेंट्रल वाटर कमीशन, whether it is military engineering service, whether it is Indian Ordnance Factory Services, कुछ भी है, बट यू वॉन्ट फील लाइक ए वर्कर। हार्डली आपको कोई फिजिकल वर्क करना पड़ेगा। यू विल बी इन्वॉल्विंग इन द मैनेजरियल वर्क, यू विल बी इन्वॉल्विंग इन द एडमिन वर्क, और यू विल बी डायरेक्टिंग, मॉनिटरिंग, गाइडिंग देम, बट यू वॉन्ट बी इन्वॉल्व इन एनी फिजिकल वर्क, राइट। सो एक पॉइंट यहाँ से भी इन्फेड होता है कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस है आईएएस ऑफिसर में और एक पीएसयू ऑफिसर में। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू वेयर यू वांट टू एंड व्हाट इज योर प्रायोरिटी, सो चूज अकॉर्डिंगली। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो a bit useful, a bit helpful and motivational, then do subscribe to my channel and hit the like button. I'll see you in the next video. Goodbye.